हेलो और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेंटरिंग हब्स चैनल। कौन है हमारे साथ आज? वजीहा कमाल है हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एसोसिएट पंजाब रीजन। थैंक यू वेरी मच वजीहा आपके टाइम के लिए। और जल्दी जल्दी इससे पहले कि हम वजीहा के तरफ अपना फोकस डाइवर्ट करें, मैं बताना चाह रही हूँ कि आज हम आए क्यों हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने नोटिस किया दैट वी बीन कमिंग ऑन स्क्रीन विद आवर टीम मेंबर्स। यस, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स माशाल्लाह अपनी अपने रोल्स में, अपने अपने कैपेसिटीज में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम इन सब एक्सपर्ट्स के साथ, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, कुछ ना कुछ मायने फेस करते रहेंगे सो दैट वी कैन कीप एडिंग वैल्यू टू द कम्युनिटी। और वजीहा कमाल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, बाकी हम वजीहा से पूछेंगे और कहेंगे कि प्लीज शेयर करें हमारे साथ। वजीहा कमाल इज बेसिकली अ कुवैती बॉर्न एंड एन एक्सपर्ट इन एजुकेशन। वो एजुकेशनल सेक्टर में काफी टाइम से रही हैं और रिसेंटली कुछ साल पहले पाकिस्तान मूव भी हुई हैं और यहाँ पे एकेडमिया का पार्ट है, पढ़ा भी रही हैं और बच्चों को मेंटोर भी कर रही हैं। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हम लोगों ने पेरेंटल वेलनेस और चिल्ड्रन वेलनेस प्रोग्राम्स, माइंडफुल इंटरवेंशंस भी इंट्रोड्यूस कराए हैं एंड वी बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सेशंस। लेकिन वी थॉट कि, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है वजिया, कि वजिया जो है वो ज्यादा बेहतर रहेंगी इन अ लीड रोल फॉर द डिपार्टमेंट। कंग्रेचुलेशंस वजिया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई हैंड्स ऑन एक्सपर्ट हो जो कि हमें जरा ये गैप एनालिसिस करके दिखाता रहे। वजिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र and thank you for having me, Zora. How do you feel today? और Because this is a bit off here. of your comfort zone, I'm sure. Yes, very off. I like to be behind the screen more than on the screen. So yeah. How are you feeling today? I would want to know. मूड एलिवेटर अगर पूछूं तो कहाँ है वजिया का? Mood elevator is somewhere between 6 and 7, I would अच्छा say. अच्छा, चलें ये गुड 6 and 7 ले लेती I'm हूँ मैं आपसे। more, because I'm more like क्या कहना चाहिए, बच्चों के साथ डील करना मुझे ज्यादा इजी लगता है as अच्छा, compared to people एडल्ट। our age. अच्छा, चलें, ये तो Yes. वाकई बहुत सारे हमारे मुद्दों में से एक मुद्दा होगा ये वजिया, जिसमें हम आपके साथ ही जो है वो प्रोग्राम्स करेंगे इस बारे में। अच्छा, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दैट, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप व्यूअर्स को और हमारी कम्युनिटी को अपने ट्रांजिशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताएं और एक छोटा सा स्निपेट दें अपने बारे में कि आप क्या करती रही हैं एंड हाउ आर यू कनेक्टेड टू दिस फील्ड नाउ। Well, I never wanted to work. I just wanted to be home. That was my agenda when I, completed my studies. But then when I got married and I went to Dubai, and my husband had long working hours, and I was home all the time I was home. So I just decided to, to circulate my CVs, and I wasn't expecting anything, to be very to be very honest. It was just something, I was just doing for the heck of it. And surprisingly, I got an offer from a British school in Dubai as an assistant teacher for grade 6. But Zora, the thing is that, when I say assistant teacher, it's the concept over there, it's very different from the concept here. Here, the assistant teacher is just, first of all, here, I think the assistant teachers are just for the the smaller classes from like, you say kindergarten to maybe from till KG2, that's it. Exactly. But there, the concept of assistant teacher is that, like I was taking grade 6, 2 section boys and 2 section girls. So it was like I was dealing hands-on with students who were, struggling with studies. Oh, So, yeah, I was assisting in that manner. I was not there to sharpen their pencils and to do cutting or to just so मतलब decorate it's the board and everything. Yeah, I was assisting them. It was like I was dealing with them one-on-one basis, and of course, under the assistance of the teacher.
but it was very different from what we have a concept of assistant teacher over here. So Okay. I just worked there for I think 1 year or so, Uh-huh. and then the headmistress of the school, she offered me another role. She said, "Why don't you assist me with my, come and join me as my assistant?" So I said, "Okay, fine." So I worked with her for another year or so, and then I got an opportunity to work in Expo Center Sharjah. So Ooh. I joined Expo Center then just after 2 years, and I joined as a customer call center agent. But then later I was a customer service representative over there. It was very good in terms of like, exhibitions were going on, and I got to meet a lot of people from different cultures. So it was very interesting. So I worked there for like, I think 12 or 13 years in the exhibition industry. Wow. But then I had to move to Pakistan due to some reason, and my kids were with me. And when I came here, I was again, like what to do, whether to stay home or to go out and explore Pakistan job industry, and everything. Yes. Um, but the safest, because it was a transition for my kids as well. They were moving from Middle East, Gee. and then they were coming here to Pakistan, and it was, it's very different. And matlab, it's a totally different environment, culture, everything. So I wanted to be with them, you know. So I decided that why not apply in a school, where they were studying. So that's how I joined or I entered this education sector. Acha. And at first, I did join as an assistant teacher. I did here as well. But like I said, it was a really big shock to me that it was totally different. I was, yes, I was assisting kids as well, but it was more towards, the extra things, as a helper of the teacher, which I didn't mind it at all, because, you have to start from somewhere. Yes. And mind you, they told me that we have two options, whether we can hire you as an English teacher for grade 7 or a preschool assistant teacher. And it was my choice that I said no, I want to go for the preschool assistant teacher, because I wanted to start from the from the very start. I wanted Super. to know that how the system works and how everything goes on. Super. Because to be very honest, nowadays the children, the curriculum basically, it's totally different from the time, when, I was studying in school. Like in English, you have got phonics. I had no idea what phonics were, you know, Yeah. because in Dubai also I was teaching grade 6. Maybe if I was in, lower levels, I would have an idea that what phonics is, but I was not. So phonics were, a different concept. Then what were sight words? When the first time the teacher, she said, sight words, and I was like, what the hell are sight words? And then I had to study, and I asked her, I told her actually, I told her that, it's not only them you're teaching me as well, because I don't know what phonics are. I don't know what sight words are. So I'm also, in the learning process. And then um, I said to myself that it was a very good decision that I'm starting from the very, Bottom. start, so that I know, yes, so I know that what all these things are. So Hmm. that's how I got in, and I was just assistant teacher for like I think 6 months, and then the headmistress, she said, no, you are being wasted, so we are going to give you grade 1. And then I was promoted as a teacher, master teacher. I was taking all the subjects, and now I'm teaching grade 3, mashallah. And I can say I have a great bonding with my students. I love them. I simply love them, and I love teaching them. And I Wow. get that satisfaction actually, when I teach them, when they learn something. And it's a give and take process. I also learn new things every day I'm sure. I'm sure. from them. Yes. So it's amazing. वाओ Amazing, एंड yeah. इट्स अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू वजीहा कि आपको लग रहा है कि ये एक आप जिन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रही हैं लर्निंग प्रोसेस एंड यू वांट टू स्टार्ट बॉटम अप हालांकि आप
आप से ही स्टार्ट कर सकती थी, आप कह सकती थी कि भाई मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाई शुड आई वेस्ट इट, क्यों मैं नीचे से जाऊं, लैडर दोबारा से कोशिश करूं, समझूं और चढ़ूं। तो मतलब आप जिन जिन चीजों के को टच बेस कर चुकी हैं अब तक अपनी आपकी जर्नी में, जो आपने हमें बताया है, वो सारी वो बातें हैं जो कि हम किसी बहुत ही जेन्युइन टीचर से सुनना चाहते हैं। हम एज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी टीचर्स पढ़ाएं जो कि उनको सिर्फ करिकुलम नहीं डिलीवर करे, बल्कि उनको जिंदगी गुजारने का तरीका भी साथ साथ बता सके। और मेरे ख्याल से वजिया आप भी अग्री करेंगी मेरे साथ जब मैं कहती हूँ कि हम जिस जमाने में, अब तो जमाना गुजर गया, हम जिस जमाने में स्कूल में हुआ करते थे, हमारी टीचर्स, चाहे वो लैंग्वेज की टीचर हो, चाहे वो साइंसेस की टीचर हो, चाहे वो आर्ट टीचर क्यों ना हो, वो इतना इन्वॉल्व होती थी हम लोगों के साथ, हमारे मूड्स उनको पता होते थे, हम में से कौन कब अपसेट है उनको पता होता था। और वो उसी पीरियड ऑफ टाइम में, जो मुझे आई एम श्योर वजिया मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, कि जो टाइमिंग ऑफ द पीरियड है, जो पीरियड्स होते हैं, वो टाइमिंग वही है जो हम लोग के टाइम पे होता था स्कूल में, उतने ही मिनट्स का होता है एक सब्जेक्ट पीरियड, जो हाँ, ड्यूरेशन। अभी भी ऐसे ही है. It's just now that thing haven't changed, but the curriculum have changed a lot. The techniques of teaching, those are एग्जैक्टली. changed. With all due respect to my teachers, I still remember them and I love them because I've learned a lot from them. But I think the teachers nowadays, they are under a lot of pressure है ना. because every day they have to learn things. Like I told you, when I started from the bottom, I had to learn things, right? But now, due to this यस. covid, we यस. had to switch from from physical teaching to online teaching, and within a month or so, and we were like going crazy, like how to adapt to this thing. Okay, what are jam boards, how to work on jam boards, how to make ppt so that our kids can understand. So I'll say that the teachers today, still they are very dedicated, very ओके. dedicated. बट Although they're हाँ. underpaid. I think it's one of the most underpaid profession ever. And it's not only in Pakistan. I think also abroad it's the same. And I don't know why that is. I just don't understand, why that is. So the teachers ट्रू still वजिया. are very dedicated. You know, I'm working with women who are like exceptional. They are tremendous. They do, I can see their effort, whatever effort they are putting in each and every day. And we are not just teaching them, we are grooming them, right? And we do know our students, like we have one look at them and we know that that student is not having a good day today, and we But want to why know that doesn't why it come that is. across then? I'm sorry, I'm cutting your thought, but Sorry. then why doesn't it? I'm sorry. Why doesn't it come across? Actually, वजिया हो क्या रहा है कि जैसे आपने कहा वैसे ही मैं भी एग्री करती हूँ, और जब भी हम स्कूल सिस्टम्स की तरफ जाते हैं या हम एकेडमिक सेक्टर में होते हैं, तो मेरा पहला पॉइंट ये होता है कि हाउ वेल टेकन केयर ऑफ इज माय टीचर। और जब भी हम इंस्टीट्यूशंस के साथ चेंज मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, आपको पता है जब हम टीम्स में जाते हैं और हम काम करते हैं, तो मेरे पहला सवाल जो फाउंडर से होता है या मैनेजमेंट से होता है, वो ये कि आपने अपनी टीचर्स को कितना सपोर्ट सिस्टम और कितना इनकरेज किया है, वो पहले बताइए, और फिर बाद में हमें बताइए कि सिस्टम में उनकी वजह से क्या डिस्टर्बेंसेस हैं। तो आई हैव ऑलवेज बीन, एंड समटाइम्स आई हैव बीन टैग्ड एज द पर्सन हु टेक्स अनड्यू साइड फॉर द टीचर। लेकिन फिर भी मुझे आप प्लीज ये बताइएगा, हमारे जैसे इंसान या हमारे जैसे माँ बाप जो कि कनेक्टेड हैं आप जैसे लोगों से, जो कि जानते हैं सिस्टम को, पीछे से स्ट्रक्चर्स को जानते हैं, तो टीचर से रिलेट भी कर सकते हैं, टीचर को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जनरल पेरेंट वजीहा ये अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतने ट्रेमेंडसली ब्रिलियंट। Zora, have you heard of that game Chinese Whisper? यस. यस. Yes. It's the same like that. I would, मैं उसको उससे शबाहत दूंगी थोड़ा सा, यस. because I do believe that the headmistress or the academic facilitator or the coordinator, they are trying to support us. Okay, but
On top of the coordinator, there's the facilitator. Above her is the headmistress. Then comes the principal. Then comes the different board of directors and all those people. So there's a chain. Okay. So I think I don't know about others, but what I think is it's just like Chinese whisper that you tell the other person something, and then as it goes on, at the end, you get a very different thing. So that's it. So I think there's a communication gap. Okay, we pass on our problems to our academic facilitator or the headmistress, and they do try to support us, and they do support us jahan tak unke haath mein decision making hoti hai, they do that. Okay, but jahan pe koi aisa problem aa jata hai jaise related to curriculum, okay, we do give our feedback to them, but I don't know, it somehow it gets क्या कहना चाहिए गुम lost हो in the जाता है बीच process. में कहीं. गुम हो जाता है, lost हो जाता है Yes, मेरे ख्याल से all. exactly. So I think that there should be दूसरा ये भी है Zora, I have observed this over here that people, they are very hesitant to talk to a person who's above your level. I don't know why that is. I really don't get it. Maybe I don't get it because मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा वो कॉन्फिडेंस दिया, या even my husband, he always tells me that go ahead, meaning what's wrong, क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, they are going to fire you, so be it, but at least you'll get that satisfaction that you made your point clear to the other person. So I think वो communication gap यहाँ पे भी आता है. They keep on saying that our heads, our doors are open for you. You can come and discuss with us, whatever you want to. And I have seen that, most of the teachers, they are hesitant to go and talk to the heads. I don't know what the reason is. I'm still trying to figure it out. But let's see. So you feel there is a big communication gap. I think आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आपने सही point out किया है कि हमारे communication gaps बहुत बड़े हैं. Plus Wajeeha, I think you would agree and the community will agree, I'm sure, कि हमने बहुत सारी चीजों को taboo बना दिया है जबकि वो नहीं है. बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जो कि हमने आपस में करने हैं. If we are not going to do it, who's going to do it? सवाल ये है जो कि आप भी अग्री करेंगी, मैं भी अग्री करूंगी, कि अगर हम किसी सीनियर का इंतजार करते रहेंगे, हम गवर्नमेंट के डिसीजन का इंतजार करते रहेंगे, तो जिन पॉलिसीज और जिन रूल्स को हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए, सोसाइटी परफेक्ट हो जाए, हमारे बच्चे का स्कूल परफेक्ट हो जाए, उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी हो जाए. वजिया, मेरा अपना मानना ये है, और मुझे पता है कि आप भी अग्री करती हैं, कि हमारा अपना उसमें हिस्सा डालना जरूरी है. और मैं कम्युनिटी को, है ना, और मैं कम्युनिटी को यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हम वही अपना हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आगे के कुछ अब आप देखेंगे कि अब आगे के दिनों में हम वही अपना हिस्सा जो है वो डालेंगे, और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि when I was not teaching, अगर मैं एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो even when my kids were studying, I was not leaving everything on the teacher. कि मैंने स्कूल भेज दिया, I'm paying the fee, so it's their headache now. No, you have to give your input as a parent as well, and I do it. I am teaching although, but अभी भी मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ उतनी ही involved हूँ जितनी कि मैं पहले थी, when I was just a homemaker. So I the parents also, they have to change their thinking. They have to their input should also be there. जब तक उनको ये नहीं पता होगा बच्चे की weakness क्या है, how are they going to work on that? बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब हम कम्युनिकेशन गैप की सिस्टम्स में बात कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे अपने इंटरनल घर के सिस्टम्स में भी आ जाती है, और वो फिर डिफरेंट बॉक्सेस में चली जाती है. वजिया, उसको बाज दफा कह डाल दिया जाता है एक तरफ के बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, उसको हैंडल नहीं कर सकते, वो वायलेंट हो जाता है, वो चीखने लगता है. तो बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं कि इनको छोड़ देना बेहतर है. कुछ पेरेंट्स को लगता है कि पॉज और रिफ्लेक्शन में अगर बच्चे को ले जाएं. बहुत दफा ये होता है कि so we're talking about a trauma sensitive place. I think you will agree. Yeah. So Exactly. है ना, because I've come, I'm sorry, मैं आपको काट रही हूँ, but I've come across a couple of students जी अभी तक जिनके साथ ये behavioral issues हैं, okay?
And when you go in deeper and you go and talk to them, there's always a reason behind it. Whether उनके घर के कोई problems हैं, ठीक है, or they are having a hard time at school due to some reason, या वो cope up नहीं कर पा रहे अपनी studies से, तो they feel inferior. So there's always a reason behind that behavior, those tantrums. So we should not ignore those tantrums. We should know that what the child is going through, किस trauma से वो गुजर रहा है उस वक्त. और There's trauma always a रीजन. और इस ट्रॉमा को वजीहा आप अग्री करोगे कि हम जिस तरह अपने माइंडफुल ट्रॉमा सेंसिटिव इंटरवेंशंस में काम करते रहे, तो आप देख भी रही हैं कि इस ट्रॉमा को ज्यादातर हम लोग क्या कल्चर में ये समझा जाता है कि ये अगर जब तक फिजिकली नजर ना आए तब तक ये ट्रॉमा नहीं है. हम उसको डीम ही नहीं करते जब तक कि बच्चा कंप्लेन ना करे कि उसका हाथ टूट गया खुदा ना खास्ता है, उसको चोट लग गई है. ट्रॉमा जितना इमोशनल और मेंटल सिवियरिटी रखता है वजीहा, वो हम सब ने देखा है और हम देख रहे हैं हर गुजरते हुए लम्हे के साथ. तो मैं यहाँ पे चाहूंगी कि मैं कम्युनिटी के साथ ये शेयर करूं वजीहा, और हम शेयर करें ये बात के खास तौर पे जो हम अब अपनी सीरीज ऑफ पेरेंटल वेलनेस और चिल्ड्रन वेलनेस यूथ डेवलपमेंट वाले जो हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं और हमारा एक सिलसिला जारी और सारी है, उसके साथ साथ हमने अब ये अपना विजन का पार्ट बनाया है, मिशन का पार्ट बनाया है कि हम रेगुलरली इन इश्यूज के बारे में जो है वो बात करते रहेंगे और आप तक जो है वो ये मैसेजेस पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना वजीहा. और हमारे साथ एक और हो रहा है वजीहा, मेरे ख्याल से आप भी अभी करेंगी. आई एम आल्सो अ मदर टू 2 चिल्ड्रन, माशाल्लाह आप भी हैं, कि मदर्स की वेलनेस का कोई पुरसाने हाल नहीं है. इसी तरीके से फादर्स की मेंटल वेलनेस या इमोशनल वेलनेस के लिए पूछना तो गवारा ये किया ही नहीं जाता. मतलब हम कंसिडर ही नहीं कर सकते कि अब्बा से ये पूछें कि आर यू फीलिंग ओके टुडे, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, वो आपको नहीं लगता कि एक ही बॉक्स में जमा होती चली जा रही है और गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है. और अब हम उस एज पर आ गए, अब हमें फिर इसको एक एक करके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डालना पड़ेगा. क्या लगता है आपको जिया? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है ज़ोहरा, बिल्कुल सही बात है. देखें, क्योंकि देखिए एक घर में रह रहे हैं ना हम सब, इट्स अ साइकिल, ठीक है. एक का मूड हर किसी को अफेक्ट करेगा. अगर मदर जो है शी इज कमिंग होम, okay, or she's not feeling well, or she's emotionally stressed or something, who is she going to take out her frustration on? Her kids, or her husband. और फिर वो वही होता है कि kids, they get in a bad mood, or the cycle goes on and on. So it's very important to be well from here first, and then ये देखो traumas और ऐसा ही है ना कि आप जैसे बात कर रहे थे कि people don't recognize it. It's the same as depression. आप देखो पहले depression को कोई बोलता ही नहीं था कि it's कोई बीमारी है. डिप्रेशन जैसी कोई चीज एक बीमारी भी है. बट नाउ everyone agrees मतलब कि it is a sickness. Depression is the sickness of mind. So I think trauma को भी we have to highlight it more, ताकि लोगों में ये awareness एक हो कि this is something which need to be dealt with and at the right time. एंड एट द राइट टाइम, वाकई, क्योंकि उसके बाद फिर जब बहुत देर हो जाती है वजीहा, तो फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स में अपनी कम्युनिटीज के अंदर देखते रहे. जैसे आपका ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ऑल्सो बीइंग अ कुवैती बोर्न, टू पाकिस्तान. आप आई हैं, आप शिफ्ट हुई हैं, आप रह रही हैं, एक फेमिलियल सिस्टम आप चला रही हैं. आई एम ऑल्सो एन एक्सपैट्रिएट, आई हैव ऑल्सो बीन एन एक्सपैट्रिएट फॉर सो मेनी ईयर्स. तो हम लोग जो ये गैप्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एज इंडिविजुअल्स, यही मकसद है, आप भी जानती हैं, हमारा इस प्लेटफॉर्म पे बार बार इस चीज का आवाज उठाना कि वजीहा, इट इज टाइम दैट वी create these support work systems, we create the support groups जो कि जरूरी है. पेरेंटल सपोर्ट ग्रुप्स की जरूरत है, बच्चों की सपोर्ट ग्रुप्स की जरूरत है, कि जहां पे हमें ये लगे कि कोई किसी को स्नब करके ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं इस बारे में हम बात नहीं कर सकते, नहीं दिस इज ऑफ आवर एजेंडा. और इसके अंदर हम यही चाहते हैं कि सारी कम्युनिटीज बात को इस तरह समझे कि हम रिलीजियस बाउंड्रीज को, लिमिटेशंस को, एथिक्स को और वैल्यूज को होल्ड करके, प्रिजर्व करके और ऑनर करके चाहते हैं एट द सेम टाइम कि हम सब एक दूसरे को समझाएं और बताएं
कि हमारी अपनी इमोशनल और मेंटल वेलनेस कितनी जरूरी है। चाहे कोई दूसरा रोल हो या ना हो, हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया है वजीहा। बिफोर वी रैप अप द शो, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से, आप नोटिस कर रही होंगी, अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, बिकॉज देयर इज सो मच दैट वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग फ्यू वीक्स इंशाल्लाह। लेकिन हम सारे टीम, ज्यादातर मुझे सोशल मीडिया वाली भी पीछे से वजीहा, आप लोग वैसे यही लोग बेचारे मुझे संभाल के रखते हैं और कहते हैं जरा अभी ठहर जाएं, अभी अगले उसमें। तो आई एम सॉरी अबाउट मी स्पिलिंग द बीन्स, बट आप क्या कहना चाहेंगी बिफोर वी रैप अप टुडेज लॉन्च एपिसोड? Well, I would like to say कि वो जो मेरा mood क्या था, आप क्या कहते हो? मूड Mood एलिवेटर पे, elevator? हाँ मूड एलिवेटर जो हमें जोएब ने सिखाया है Yeah, वही it's वाला। 6:10 now. I started with 6 to 7 and now it has reached 10. So I think it's a good thing, Zora. What do you think? Superb. Zoe will be Right? super happy, and I'll make sure that he watches the episode so that he knows कि उनका जो mood elevator है वो हमने कितना वायरल कर दिया है पाकिस्तान में, and that everybody is using it. So जो हमारी community है, वजीहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा इसलिए खास शुक्रिया क्योंकि Thank वजीहा you. जो है वो बहुत बिजी रहती हैं अपने स्कूल की स्पेसिफिक्स में। जिस तरह इन्होंने अभी बताया, ये हर छोटी चीज से भी कनेक्टेड रहती हैं, अपने बच्चों से कनेक्टेड रहती हैं, और अपने भी दो रोशन सितारे जो इनके घर में हैं उनके साथ भी इन्वॉल्व रहती हैं। तो आपका टाइम निकालना हमारे लिए ऑनर की बात है, प्लेजर की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम Anytime, anytime. कि उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, एंड आई एम श्योर टीम में सब लोग अग्री करेंगे कि हम सबको बहुत सपोर्ट मिलेगी ये सोच के कि क्योंकि आप हैंड्स ऑन स्कूल सिस्टम का पार्ट हैं और आप एकेडमिक इंडस्ट्री का पार्ट है, यू विल बी ऑल्सो बी अ वेरी गुड गाइड इन लेटिंग अस नो इफ वी फॉल बैक आवर विजन कि नहीं, दिस इज व्हाट वी हैव टू एड्रेस एंड दिस इज व्हाट वी विल एड्रेस। Thanks for the confidence, Zora. I'm sure about it. Don't worry. So इंशाल्लाह, इससे पहले कि मैं करके सारा ही स्पिल कर दूं और सारा हमारा जो है वो मजा और सरप्राइज जो है वो चला जाए, आई थिंक हम रैप अप करते हैं वजीहा, ऑल्दो आई डोंट फील लाइक रैपिंग अप, लेकिन नेवरदलेस, सो हम नाम और टाइटल कुछ भी अनाउंस नहीं कर रहे इस दफा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एज अ सरप्राइज आए ऑन टू योर स्क्रीन्स एंड ऑन टू आवर पेजेस। आप लोगों ने अब क्या करना है वो ये कि हमारे पेजेस और स्पेसेस को बहुत क्लोजली वॉच करना है। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube के चैनल को, तो प्लीज अब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। और हम इसी तरह मेंटरिंग हब की टीम, लीड, सब लोग मिलके ग्लास सीलिंग्स सारे के सारे तोड़ने वाले। वजीहा रेडी है ना? हम सारे के सारे ग्लास सीलिंग्स तोड़ने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड। Thank you very much everyone, and keep watching the spaces for the updates, because we're going to come back to your screens, and for us, our stakeholders with these programs will be the children, will be the mama, will be the baba, also the schooling systems जो सवाल पूछते हैं। हम तो ऐसे, हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत नॉर्मल आते हैं जोरा, आप कह रही है कि ट्रॉमा सेंसिटिव बना दे स्कूल को। तो ये सारे सवाल और बहुत सारे जवाब इंशाल्लाह हम वजीहा के साथ लेकर आएंगे आप लोगों तक, और नेक्स्ट एपिसोड तक आप लोगों ने इंतजार करना है। और मैं अपने स्पिल द बीन्स नहीं कर लूंगी और पोस्टर का वेट करेंगे, वरना टीम जो है मुझे कहेगी मैम प्लीज होल्ड इट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल सी यू अगेन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वजीहा। Allah Hafiz. Allah Hafiz.